You're also working on a real estate project. Yes. By the name of Monkey Forest. Yes. Correct? Again, the team told me that you're very, very passionate about this and this is a dream project. So, this is both of you are working on this together. So, thoda sa design philosophy, what's so unique about it? Why is it so passionate for both of you? So how the idea came is when I was back in 2020 COVID time. हमारे घर में we have this extension room which is a glass room and there's a beautiful pond outside. We call it the magnet of the house basically. Okay. COVID में everyone was in that room, so everyone wanted space. तो ऐसा टाइम टेबल टाइप ही था. अभी आज सुबह पापा की मीटिंग, मेरे दोपहर के वो ऑनलाइन क्लासेस, मेरे भाई के, मामा का योगा और समथिंग लाइक दैट. And that experience really saved us in COVID because that happiness we used to get from that room connected to that nature. We have a very small house. It's not a big house. So that feeling, and at that time there were a lot of plotting schemes coming into design. Right. There was a boom in Ahmedabad. So somewhere along the line, I pitched to Dad that why don't we make our own project? And there was always a dream. So he had come up with some really lovely ideas. Why don't you talk about that? Okay, so see, I'm from the family background, the real estate. My brothers are there, but I always wanted to become an architect. तो मुझे वो I never wanted to become, so I become always architect for my brothers. So I always say कि भाई मुझे डेवलपर नहीं बना है. डेवलपर बना तो मैं 35 years बन चुका था. मेरे brother family है ना, तो something like this. Now I remember that when she come and because I'm architect for my brother's family, right? So Anushri used to go, अरे लंदन में condominium तो इतने सुंदर होते हैं. Because now we both are architect. Our thought process are different. चाचू ऐसे क्यों नहीं बनाते? Why my uncle is not making like this? And I always say everybody has their own maths. I always say if somebody asks you to make a Bata, make best Bata. Don't ask for the Reebok or Nike. Right. आप सही प्रोडक्ट वो क्लाइंट के लिए बनाओ. जो मेरा भाई है और XYZ, आई टू डिज़ाइन फॉर देम. तो आई से कि भाई ये है, बट उनकी फिलोसफी में नहीं बनेगा तो उनके हिसाब से बनाओ, नहीं तो वो भी फ्रस्ट्रेशन होगा, हमारा भी होगा. नो, तो दैट इज़ व्हाट वी नो कि मे बी दिस प्रोडक्ट वुड हैव बीन गुड, बट उनका वो थॉट प्रोसेस नहीं, तो आप यू विल ट्राई, इट विल नॉट हैपन. सो आई से अनुश्री, ये अगर ऐसा करें तो आपको खुद बनाना पड़ेगा. नो, काइंड ऑफ वी हैव टू मेक इट बाय आवर सेल्फ. यस. Now jumping into the real estate is a huge risk in a way. No, you can become bankrupt. I mean, because and especially when you work like an architect as a consultant, suddenly so much of pressure of finance to manage would become difficult. So for me, for us, it was a good that मेरा backup plan था कि हमने अगर वो किया नहीं सक्सेसफुल हुआ तो भैया को बोले कि उसको हैंडल कर लो, तो वो कर लेंगे आराम से. बोलेंगे यार मैंने तो मना किया था. आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू माय ब्रदर्स एंड आई से कि ऐसे सोच आ रही है. नो, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, वी हैव गॉट द मंकी फॉरेस्ट लैंड, हमने डन कर दिया था. तो काइंड ऑफ ब्रदर को जाके बोला, हिरन आई टेल यू, सी when you came and started the working, we used to say that Hiren is a brother of the builders, because the builders was a good, today is a very good name in city. आज हम उल्टा बोलते हैं, हम हिरेन पटेल आर्किटेक्ट के भाई हैं. तो he say you done nicely, हमारी जर्नी अच्छी है, we were from simple family, things look rosy, but why are you disturbing your life at the age of what? I'm heading towards 60. Your lovely journey, carry your, आपका जो strength है उस पर ही काम कर रहे, keep doing. और मैंने बोला सर भैया तीर छूट गया है, अभी गड़बड़ होगी तो आपको पकड़ लेना है, अनुश्री का ये तुक्का है, तो वी आर डूइंग. एंड देन माय nephews also like little supportive, I would say, kind of. Yeah, my cousins were very helpful. हाँ अनुश्री अच्छा चलिए. Yeah, they would teach me. जैसे अनुश्री करो, चलो हम हेल्प करेंगे. तो and the being a girl doing a developer, it's a new thing in Ahmedabad for us, no. So Anushri is let's say developing it, but that's how we thought, okay, we want to create something experience. So design, built and maintained by HPA would have been something unique. Nobody has thought of it. तो अभी मेंटेन तो क्या करेंगे, हम लोग बोर्ड पे लिख दो मेंटेन करेंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है. तो वी थॉट कि जब वो मंकी फॉरेस्ट का बोर्ड बना तो लेके मेंटेन बाय आल्सो HPA कर लिख दो, तो वी आर मॉरली बाइंड. नो, तो दिस हाउ वी टुक दैट. एंड देन वी रियलाइज कि वी आर ऑलवेज इन सर्विस लाइन. हमने हमेशा सर्विस, तो हमारे आज मेंबर्स भी है, तो उसको मेंबर्स के हिसाब से देखते हैं, वी ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विस टू देम. So somehow that simplicity has worked for us.
people had a faith of on us to see kind of we have been creating, so they are happy. So I think now मैं हंसते हंसते बोलता हूँ ना कि मेरी 35 ईयर्स में सबसे अच्छा है मेरे को क्लाइंट मिला है वो हिरेन पटेल खुद है तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. तो आज लेट्स से वी हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि भाई दिस इज डिजाइनर्स पेपर लैम्प. ना पेपर लैम्प की कॉस्ट होती है 5,000 रुपया. मैं ओरोविल से लेके आऊँगा तो 5,000. But if this is signature paper lamp, it may go to maybe lakhs of rupees, for example. We will do that. Okay, we want art of some sculpture or something, because we understand that. We justify my real estate में नहीं करो. But now we have freedom, so then we started doing that and we are enjoying that. So that's why अभी जल्दी नहीं है. Client को भी बोलते यार वो बन रहा है आपका बनाएंगे आप ट्रस्ट रखिएगा, but it's a journey. Let's not